Basically, our next problem statement is large differences. So in this problem statement we have been given an array A, okay, and its length is n and a positive integer k, okay. So these three things we have been given here. So basically the length of an array means A of I will be in between 1 to k, okay. So the range of A of I means the element of an array A will be in range 1 to k, okay, for every index 1 to n. So what basically we have to do is here we have to set the value x, okay. We have to set the value of A to x and make the difference of the adjacent elements. This we have to do, okay. We have to just, for example, let's take an example 2 3 4 5. We have given this example, okay. So basically we have been given this example. So now what we have to do is just we have to subtract 2 minus 3, then 3 minus 4, then 4 minus 5, okay. First of all 2 minus 3, what it gives? It gives 1. Basically this operation then converts, gives all the numbers positive, means it converts negative to positive, and positive only it will be positive only, okay. So it performs this operation, okay. So basically it's giving 1, then 3 minus 4 1, and 4 minus 5 1. So basically the difference is 3, okay. So this operation we have to perform. So now what's the problem statement says? We have to find the maximum possible value of the sum of adjacent differences, okay. So basically what I mean to say is that we have been given k, okay. So we have to just swap the elements, means 3 6 9 12. We have to just swap the elements with k. So basically we have been given k equals to 20, okay. So the value of k will be 1 to 20. Is that clear? So what we have to do is just we have to swap. For example, we take it as 20, okay. First of all, let's find the difference. 3 minus 6, what it basically gives us? 3 minus 6, 3, okay. It gives us 3, and 6 minus 9 also, wait, saying 6 minus 9 also 3. Is that clear? So basically it's giving us the difference, means it's giving us total addition 6. Is that clear? Yes. So basically it's giving us the difference 6. So now what we have to do is just swap the 6 with 20, okay. So let's 3 20 9 12. So basically difference will be what? 17. Basically its difference will be 17, and its what difference will be 11, which is equals to, its addition is equals to 28. Is that clear? And now what we have to do is just swap the elements with 1, 3 1 9 12.
Okay, so what is difference will be 2 and it's 8. 2 plus 8 equals to 10. So as we can see that in this whole difference we have got 28 as our maximum. Okay, we have got 28 as our maximum. So basically this we have to find. So by how much we have been got our maximum? This is the original one and this is the new one. So basically what we have to do is do 28 minus 6 equals to what? 22. We have a difference of 22. Okay, such a huge difference. So now basically let's take the some core example of it. Yes. So we have been given 3 8. So our basically our n equals to 3 and k equals to 8. Basically our k is from 1 to 8. Okay, from 1 to 8. Okay, is that clear? This is our k. Yes. So basically now what we have to do is find the maximum difference between this. Is that clear? Three elements we have been given and three in the array. So amazing. Yes. Now basically what we have to do is here 7 to 7 we have been given. Huh. So first of all, what is our current difference? Basically our current difference. Yes. So basically our current difference will be what? 7 minus 2. But it will be 7 minus 2, it will be 5, and 2 minus 7 equals to 5, it will be 10. So this is our current difference. So now basically now we will take one difference. Okay, one difference. What happens in one difference? We will just swap 2 with 1. Okay, so our 7 minus 1 will be 6. It will be 6 plus 6 equals to 12. Okay, and our now it will be how we will take k difference. Okay, so basically in k difference we will swap this 2. Okay, swap this 2 with the k. 7 8 7, 7 minus 8 1, so 8 minus 7 1. So basically 1 plus 1 equals to 2. So as we can find the maximum of this is 12. Okay, and how much difference we have got here? The difference we have got here is current difference minus one difference. Okay, so this is the difference we have got, which is 12 mod of 10 minus 12 equals to 2. Okay, so we have a got a difference of 2 in this problem statement. Is that clear? So now basically so now this code will run consecutively. So now let's try to understand this problem statement with the help of code.
Yes. Okay, so first of all, now we will take input. This is our test cases input. Test cases as input. Okay. Yes. So now we will take n and k as input. And now we will take our array as input. Yes. So now first we will take as our original means original difference means our difference sum. Our difference sum is initial. Let's initialize it to 0. Okay. Now we will what we'll do? We'll run a for loop for I in range n minus 1. Okay. And then we will store the original difference values. Okay. What we will do here is store the original difference values. Basically here ABS is used to convert positive means keep the value of difference in positive only. It will convert negative to positive and keep positive to positive only. Okay. So basically it keeps the values in means the original difference. Okay. For example 7 to 7. Okay. The original difference keep the values 7 minus 2 equals to 5 only. Is that clear? It keeps the original difference values 5. So now now we will take sum. Max sum equals to 0. So now we will run a second for loop for I in range n. Okay, we will now run a second for loop. There we will take current difference equals to 0. Then one difference equals to 0, and then k difference equals to 0. Okay, basically our current difference it just stores the values of the original elements. R1 difference R1 difference swaps the number with 1. Okay,
and our k difference swaps the number with k. Okay, got the point? So if our I is greater than 0, okay, if basically our I is greater than 0, so then we will iterate this, means our current difference plus equals to, means it goes on incrementing. Okay, yes. So in this uh, in this if statement, if I greater than 0, okay, so we will iterate through left adjacent position. Is that clear? We iterate to left adjacent position. Okay, basically I minus 1 is to the left of I. Is that clear? So now our basically one difference and now our k difference. Okay, so now if I is less than n minus 1, okay, so if our I is less than n minus 1, okay, so now basically now we will take a next if loop, if statement. If I is less than n minus 1, okay, if I is less than n minus 1, so it will iterate. Wait a minute, if I is less than n minus 1, it will take difference through right of the element. Okay, so it will just take the difference from the right of the element. Okay, so now we will take a final difference. Final difference we will take a maximum of current difference and a maximum of one difference and k difference. Okay, so now our maximum, basically our maximum equals to maximum of maximum comma final difference minus current difference. Is that okay? Yes. So now basically now we will print.
Yes. So basically now what we will do, what we will just print the we will just print the difference sum plus maximum sum. Okay. So now let's submit the code. Basically it's giving some runtime error. Let's try to resolve it. Oh, sorry. I forgot to take map. It's okay. My viewers are much intelligent. They know the difference. Sorry, guys. Yes, now it's giving correct answer. Yes. Basically now we have got a correct answer. So now I will just give some spaces so that it will be more easier for you to understand. Okay. Yes. Please go through the code and explanation. And if you got any of the doubts, you can ask me in the comment section. Okay. Thank you. Problem is double trouble. Okay, so basically what's the problem statement says that Alice has n magical balls, n balls. Okay, and they are placed on x-axis. They are placed on x-axis, and ith ball is initially as position xi. Okay, and it has power of pi. Is that clear? So basically xi plus 1 is greater than the pi. And it is in the range of 1 to n. Is that clear? So basically Alice can do this at most twice. So we have to choose the index high in such a way that ball at I is not activated. So basically what the problem statement says that we have been given n number of balls, okay, and their powers. So basically according to the power we have to move the ball in left or right direction, so that if it touches the other ball, so it activates, and we have to activate all the balls. Okay, so just the we have to output if all the balls are activated, then we have to print yes, and if not we have to print no. Is that clear? This is the main approach of the problem statement. Let's try to understand this by a small example. Okay, so basically we have been given a ball, for example at 1, at 1, 3, 5, 9, and then at last 20. Basically the power of first ball is 1, second ball is 1, third ball is 2, third ball is 2. Okay, the fourth ball at 9 is 10. Okay, and fifth ball which is at 20, its power is 4. Is that clear? So basically these are the powers of the balls. Okay, so what we have to do is just that according to this power we have to move the ball. Okay,
For example, let's understand this by a small example. Okay, we have been given a ball at 7. Is that clear? And its power is, let's suppose 3. 3 is the power of the ball. So we have to move the ball at 3 position. First, second, third. Okay. So we can move the ball at 3 position in either left or right direction. 1, 2, 3. Is that clear? So we are supposed to move the ball. And if for example, uh, if suppose this is the ball and its power is 3, and here we have been given a ball with a power of 4. Okay, so we have, what do you mean by activated? So activating the ball means moving the ball at 3 position, 1, 2, 3. So this ball goes here and collides the ball at index 6 collides the ball at index 9. Okay, so this means it has activated the ball. So we have got 4 balls activated here. So now at yes, 6, we have been given a third ball at index 15. So as we can see that ball number second can move only 4 position. Okay, so it is not able to activate, but this one, but this 1, 2, 3, 4, 5, 6. So it is able to activate the ball number 4. Okay, so this is able to activate the ball number 4. So as we can see that both the three balls are able to move. Okay, so we can say that all the balls are activated and print S. Is that clear? Let's try to understand this problem statement with the help of these test cases. Is that clear? Okay, so now let's begin. So let's suppose we have been given the test case number 1, which in which the position of first ball is at 3 at first. Okay, at first index, and its power is 1. The second ball is at third index and its power is also 1. The third ball is at index 5 and its power is 2. Okay, the fourth ball is at index 9 and its power is 10. It's the maximum power. And the fifth ball is at 20 and its power is 4. Okay, as we are able to see that we have got all the 5 balls, in the position. Is that clear? So basically what we can do, first of all let's see the approach. According to the problem statement, the first ball can move only one position. Is that clear? It can just move a single position. Okay, so basically it's not able to activate the first ball. Also the second ball is not able to move in the, means it is not able to activate the first ball. Either the second ball is not able to activate the first ball nor the second ball, because it has been given the power of 1, so it can move only one index apart. Is that clear? But the third ball has a power of 2, so it can move 2 position, 1, 2. So the third ball is able to activate the second ball. Okay, also the tenth ball is able to activate the third ball. Okay, at last the fourth. Let's see, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So basically it's not able to activate the fourth ball. So as we are able to see that the three balls are able to be activated. Okay,
not all balls are to be activated, so its output will be no. So now let's consider how the balls will be collided with each other. Okay, so there will be six ways in which the balls will be collided. Either the Wait a minute. Okay, so this is the ball will move in the right direction. Okay, it will activate all balls, or it will move in the left direction and activate all balls. Is that clear? Okay, so our next approach will be what? Either the ball in the right direction will collide the second ball and then it will go. Okay, or the ball in the left direction will collide the another ball and will activate the another balls. Is that clear? And our third approach will be, yes, what will be a third approach? Basically a third approach will be the balls, adjacent balls, okay, in the left and right direction will activate the another balls. Means this will go in left and this will go in right. Okay, the ball will go in left and the ball in right will go in right. Is that clear? And at last this one. Okay, so basically here we have got our six cases in which the balls will be collided and activated. Okay, so now let's try to understand with the help of an example. So let's take a second test case. Okay, basically in the second test case we are able to see that the ball is at the first position and its power is 1. Next the ball is at fourth position and its power is 2. Okay, next the ball is at 12th position and its power is 3. And at last the ball is at 15th position and its power is 1. Okay, so in this we are able to see that the first ball is not able to move in the right direction, okay, because its power is 1, and the 2 is how much apart? 3 blocks apart. Okay, so basically 1 2. Okay, the second ball will come at the second position. Is that clear? Now the first ball will go to the second position. Okay, and in this way the two balls will be collided, and as we can see here also the third ball will collide with the fourth ball. Okay, in this way the all the four balls are being activated. So basically how we will know that's how the balls are being collided. Okay, so what we will do is just we have a difference. We will take a difference of the index, right index from the left index. Okay, what we will do, just take the difference. We will minus the 4 minus 1 equals to 3. Okay, we will just do this and we will check if the difference is greater than the power. Okay, so we will break. Okay, and if not, if the difference is less than, okay, if the difference is less, so we will just give left equals to y. Is that clear? So basically this kind of approach we are going to use. So I think we are able to understand this approach. So let's try
another example also. Basically in this example we have been given the first ball is at position 1 and its power is 3, then 4 and its power is 1, then directly 10th and its power is 1, and then 11th, okay, its power is 3, and then 15th its power is 7. Okay, as we are able to see that the third ball, 1 2 3, the third ball is able to activate the second ball, okay, but how come, and the first ball is able to activate the second ball and the third ball is able to activate the fourth ball, okay, so we are clear from this. But the fifth ball whose power is 15th, okay, so it can go in the left direction, okay, so we'll just use a for loop in reverse, okay, just use a for loop in reverse direction, and we will subtract. What we will subtract? The index at I plus 1 position from the index I, means we will just subtract what? We will subtract 15 minus 11, which is equals to 4, and we will compare if, and we will compare if the power is what? 15. So if power is greater than the index, so we will just print S, okay, else no, else we will break, okay. So basically this is our approach, okay. So let's try to understand this by code. Then I will take n as input, okay, then now I will take the x as input. I have taken the x as input now, and then I have taken the power as input. Okay, now I am initializing the left variable to 0 and the right variable to n minus 1. Is that clear? Just I am initializing left to 0 and n minus 1, and left right to n minus 1. Okay. Then I will run a for I in range. I will run a for loop for I in 1 to 1. Of minus of I minus 1. You put the difference, and if the difference is greater than p of I minus, and we will check if the difference is greater than the p of I minus 1, okay. So basically we have checked here, and if it is greater, then we will just break, okay.
else what we will do is just initialize left equals to I, means the ball is given the ith position. Okay, and for loop from left to right. And now we will run a reverse for loop. Okay, now I am running a reverse for loop for I in range n minus 2 minus 1 minus 1. So basically what it is, a reverse for loop. It is basically a reverse for loop from right to left. Okay, as you are able to see, it's a reverse for loop. Now basically we will check the difference. Okay, what we will do is we will check the difference. If the right, we will means what we will do is we will subtract the left wall from the right wall. Okay, just we will do is subtract the left wall from the right wall. Minus x of I. Okay, and if the difference is greater than I plus 1. Okay, and if the difference is greater than, okay, else right equals to I. Then we will, what we will do, we will subtract if minus 11. If it is smaller than or equals to run. Okay, yes, now we will initialize again left right. Okay, now we will again run a for loop. For I in range 1 to n. I am running a for loop for I in range 1 to n. Is that clear? Basically, what we will check the difference. Difference of what? Difference of ith element from I minus 1 element. Is that clear? We will after the completion of the code we will just discuss one time. So please watch the full video. Okay, don't skip. And you will not understand.
Now if the difference is greater than p of I, okay, we will just break and again that left equals to, then we will run again a reverse for loop for I in range n minus 1, so if the difference x of I plus 1, if the ball at the right index, no sorry, if the ball at the left index of the ball of left index minus ball at right index, okay, so if our difference, okay, if our difference is greater than power at ith position, okay, we will just break my tablet is giving trouble to me. Actually I don't have laptop, so that's why you have to manage. Okay, no worries. So else we will give right equals to I. Okay, we have just given right equals to I. So now basically what we will do, we will just check the difference of right minus left. Okay, if right minus left is smaller than or equals to I, okay, if right minus left is smaller than equals to I, we will just print s. You guys may be thinking that the upper one is similar to the down one, but it's absolutely not. The codes are different. Okay, as you are able to see that we have compared the difference to p of I plus 1, okay, and here we have compared the difference to p of I, okay, that's the main difference here in the upper one and the lower one. Is that clear? So we have been done with the 4 techniques. We have discussed 6 techniques now. Okay, so we have been done with the 4 one. Now let's do it with the 5th one. So we will initialize our c to 0. Okay, now we will run a for loop from left to right for I in range n minus 1. Okay, for I in range n minus 1, our diff equals to x of I plus 1 minus x of I. So basically we will just have a difference of right element from the left element, means the index of right ball minus index of left ball. Okay, so if our difference is greater than power of ball at ith position, okay, if our difference is greater than power of ball at ith position, so we will just increment our c. Okay, now we will check if our c is smaller than equals to 1. Okay, if our c is smaller than or equals to 1, we will just print s. Else we will just print no.
Okay, so we have done with our code. So now let's try to submit it. Okay, it's giving wrong answer. Let's try to debug this code. uh, Left first, right equals to minus 1. Yeah, I got that. If right minus left is less than equals to I, it's 1. Okay, so now let's try to submit it. Yes, it's giving again wrong answer. 1 to n x of I minus x of I plus 1 is greater than p of I, or in n minus 2 x of I is greater than p of I is right equals to I. If right minus is less than equals to I, print continue. For I in range n minus 1 of x minus x of I take print as continue. Basically we have been lost to one hidden test case. Okay, I need to add one additional statement to it. So we have just forgot. Okay, we have just forgot a single statement and nothing else. As we have incremented our c, we will check if c is less than or equals to 1. Okay, if c is less than or equals to 1, what we will do, we will just print s. Okay, and then what we will do, we will just continue. And there comes another one. Okay, we will initialize. There comes the hidden test case. Okay, we will initialize c to 0. Okay, and then we will run a for loop in reverse direction. So now we will check the difference. Diff equals to, so we have, as we have run the for loop in reverse direction, we will just differentiate, take the difference of x of I. Okay, minus x of I minus 1. So we are basically subtracting the leftmost element from the rightmost element. Okay, from the right end. So now we will check if our difference is greater than p of I, means the power of ith one. Okay, so we will just increment our c. Let's try to submit it.
I think now it may run. What it's giving the output. Basically, I have forgot one thing, just a basic one thing. Continue. Okay. Yes, now it's giving a correct answer. Okay. So basically, now let's try to understand this one from the with the help of some diagram. Okay. So basically, what's the first statement? Yes. So basically, it's check the ball from left to right. Okay. This one. This checks the ball from right to left. Means the ball is coming from the right direction to the left, and it will activate all the balls. Is that clear? Then next one. Okay. This one. So basically, in this one, yes. So in this one, the ball comes from the leftmost direction. Okay. And it meets the another ball. It just meets the another ball, and that ball activates all the balls. Okay. And this one basically the rightmost ball meets the leftmost ball, and it activates all the balls. Okay. In this we have been given in 1 to 2 balls. Okay. Then at last comes the edge case. Okay. In this one in this one, what we are able to see that the ball is just coming from the rightmost direction to the leftmost direction. Okay. What? Let's try to understand. And this one. Okay. So basically this is the approach. So basically this is our basic approach. Okay. And it will check all the test cases, and you can see the code also accordingly. If you have any of the doubt, you can ask me. Okay. In the comment section, please comment about the explanation also. So thank you very much. Comment is speedrun. Okay. So basically the problem states that shape is playing a computer game. Okay. There are n monsters on the number line. So basically again there is a use of number line. So there are n monsters on the number line, and shape is at position 0. Okay. Shape is at position 0 on the number line. Initially the ith monster has health equal to hi. Okay. And it is at the position of ai. It is guaranteed that ai is smaller than ai plus 1. Okay. So basically, if the shape choose a single index, means shape can fire only one bullet at a time, and the health of the monster will reduce by only one. And also the another monster will move by only one
one single step. Is that clear? So at final the monster have to come to index 0 so that and the shape will defeat the game. Okay, and if the shape manages to kill all the monster before they reach at position 0, he wins. In this there is again a twist. Okay, shape has a bomb, okay, which is placed at a position X. It is placed at a position X and all monster whose starting position lie between X minus K and X plus K will die immediately. Means from X minus K to X plus K, means from X distances the monsters can be killed. Okay, so basically we have been given till 2K the monsters can be killed. Okay, so basically yeah, the problem state, let's try to understand with the help of an example. Yes. Okay, let's take the first test case. uh, n is equals to 5, means we have been given 5 position and 5 health, means there are 5 monsters and their health is given accordingly, and k equals to 3. K is the distance till which the bomb can be used, means 2k. The bomb is effective till 6 positions. Is that clear? Okay, so let's understand. Basically the shape is present at 0 position. Our shape is at 0th position and the first monster is at 2, then 4, then 6, then 9, and then 11th. Is that clear? Subsequently 5 monsters are there and their healths are 1, 1, 4, 4, 1. So basically the shape can kill only one monster at a time. Okay, so shape can kill only just one monster at a time and the according to their health. Okay, so basically the health of the first monster is 1. Is that clear? Its health is 1, so the monster will die in one shot only. Okay, so basically मतलब हमें करना क्या है कि इन मॉन्स्टर्स को हमें किल करना है. ओके, सो अगर आप यहाँ से लेके अगर ये सिक्स इंडेक्स वाले पे जाओगे, सिक्स मॉन्स्टर पे, तो इसको वन वन किल करोगे तो ये क्या हो जाएगा 3. ओके, तो तब तक कि ये वाला मॉन्स्टर लेकिन आगे बढ़ जाएगा, है ना. इसको किल करेंगे, इसकी हेल्थ 2 हो जाएंगी. फिर तब तक कि ये वाला जो फर्स्ट मॉन्स्टर है ये 2 पोजीशन चला जाएगा और ये 0 पे आ जाएगा, जिससे कि शेप की डिफीट हो जाएंगी. ओके, सो हमें फर्स्ट पहले इसे क्लियर करना पड़ेगा. फर्स्ट हमें ये मॉन्स्टर को क्लियर करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये मीन्स एक पोजीशन में ये क्लियर हो जाएगा ये वाला मॉन्स्टर, क्योंकि इसकी हेल्थ जो है वो 1 ही है सिर्फ. इज दैट क्लियर? हेल्थ क्या है, सिर्फ 1 है ना. तो इसलिए एक ही इसमें क्लियर हो जाएगा. तो सेकंड वाला जो है, फिर सेकंड वाला भी क्लियर हो जाएगा. लेकिन ये वाला, तो जब तक कि ये मॉन्स्टर आते रहेंगे सामने, तो अभी ये वाला, ये देखो ये 4 पोजीशंस तक आ सकता है ना. आप देख सकते हैं ये 4 पोजीशन तक चल सकता है क्योंकि इसकी हेल्थ 4 है. तो ये शेप ये 0th पोजीशन तक नहीं आ सकता है, तो शेप इसका किल कर सकता है ना. और सब्सिक्वेंटली ये वाला भी, है ना. तो ये से 4, तो और ये वाला भी यहाँ तक आ सकता है 10th पोजीशन तक. तो बेसिकली कोई भी मॉन्स्टर आके किल नहीं कर सकता शेप को. तो बेसिकली मीन्स इसमें शेप की विन होने वाली है. ओके, सो फॉर एग्जांपल हम एक एज केस पकड़ते हैं. ओके, हम इसको ले लेते हैं 8. इज दैट क्लियर?
हम इसे ले लेते हैं 8। सो बेसिकली ये 8 पोजीशन तक चल सकता है, और ये 0 पे भी जा सकता है। ओनली कितने मूव्स में, 6 मूव्स में ये 0 तक जा सकता है। तो इसको किल करने में शेफ को कितने लगेंगे, 8 पोजीशंस लगेंगी, लेकिन ये तो 6 पोजीशन ही दूर है। तो ये, और शेफ क्या कर सकता है, एक टाइम में एक को ही किल्स कर सकता है ना। तो बेसिकली इसमें शेफ की डिफीट हो जाएंगी। लेकिन लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे पास दिया है बॉम्ब। ओके, सो हम उसे यूज़ करेंगे। सो बेसिकली हम इसमें क्या करेंगे, प्रीफिक्स कैलकुलेट करेंगे। मीन्स किसके लिए, ये इस टाइप के मॉन्स्टर्स के लिए, ओके, जिनकी हेल्थ मीन्स डिस्टेंस से ज़्यादा है। ओके, तो बेसिकली प्रीफिक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, पी आर ई प्लस हेल्थ ऑफ आई। ओके, और इसे कंपेयर करेंगे इंडेक्स के साथ। इज दैट क्लियर, हम इसको ऐसे कंपेयर करेंगे। सो बेसिकली, और हम एक इंडेक्स ले लेंगे, मीन्स मॉन्स्टर को मॉन्स्टर को हम इनिशियलाइज कर देंगे -1। ओके, सो ऐसे हम इसको ये करेंगे, और हम इस इंडेक्स को -1 कैसे इनिशियलाइज करेंगे। ओके, सो बेसिक आइडिया ले लेते हैं एक बार इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट का। यस, एक बार शुरू से मतलब बेसिक आइडिया ले लेते हैं। ये यहाँ पे हमारा शेफ प्रेजेंट है 0 इंडेक्स पे। ओके, सेकंड, फॉर एग्जांपल 4th पोजीशन पे है फर्स्ट मॉन्स्टर, 8 पोजीशन पे है सेकंड मॉन्स्टर, इसकी 3, 11 पोजीशन पे है थर्ड मॉन्स्टर, इसका है 10, 14 पोजीशन पे है फोर्थ मॉन्स्टर, इसका है 1, और 17 पोजीशन पे है नेक्स्ट मॉन्स्टर, इसका है 2। ओके, सो बेसिकली हम इसका एक बार क्यूमुलेटिव फाइंड कर दें। इसकी हेल्थ 1, 1 + 3 4, 4 + 10 14, 14 + 1 15, 15 + 2 17। ओके, सो बेसिकली अभी हम देखते हैं कि ये जो 4th पोजीशन पे जो मॉन्स्टर है, 4th पोजीशन, 8th पोजीशन, 11th पोजीशन, 14th पोजीशन और 17th पोजीशन, ये जो इनके पॉइंटर्स यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, सो बेसिकली फर्स्ट मॉन्स्टर को किल करने का, उसकी हेल्थ क्या है, 1 है, और इसका इंडेक्स 4 है। तो मीन्स हमारे पास 4 मिनट्स है, मीन्स 4 टाइम है। ओके, फॉर एग्जांपल टेक 1 इंडेक्स एज 1 मिनट, हमारे पास 4 मिनट्स है। ओके, एक मॉन्स्टर को किल करने के लिए। सो बेसिकली ओके, हम किल कर लेंगे। नेक्स्ट पे जाते हैं। मॉन्स्टर का हेल्थ 4 है और हमारे पास कितने मिनट्स है, 8 मिनट्स। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं 8 मिनट्स और ये हेल्थ 4। ओके, ओके, हम इसे भी किल कर लेंगे। इज दैट क्लियर, क्योंकि देख सकते हैं ना आप, ये 4 है इसका हेल्थ, और इसका हमारे पास 8 मिनट्स है। 1 मिनट में हम एक मॉन्स्टर को किल कर सकते हैं, तो हमारे पास 8 मिनट है। 8 मिनट में हम 4 किल कर लेंगे। ओके, फाइन। सो नेक्स्ट मॉन्स्टर पे जाते हैं। नेक्स्ट मॉन्स्टर का हेल्थ क्या है, 14। प्रेटी गुड, 14 हेल्थ है, और हमारे पास टाइम कितना है, 11। 14 की हेल्थ वाले मॉन्स्टर को मारने के लिए हमारे पास कितना है, 11 ही टाइम है। सो नो, मीन्स ये नहीं हो पाएगा, तो ये मॉन्स्टर किल नहीं हो पाएगा। ओके, सो ये जो मॉन्स्टर है यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो बेसिकली हम इंडेक्स लेंगे। ओके, सो ये जो 14 मॉन्स्टर है ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना। सो हम इसको इंडेक्स ले लेंगे, अज्यूम कर लेंगे। सो ये हमारा IND होगा। ओके, ये क्या है हमारा IND। वेट अ मिनट, तो हम IND, ये जो मॉन्स्टर है जो कि हम इसे किल नहीं कर सकते, इसको हम IND का ले लेते हैं, है ना।
तो फिर हमने इसको इनिशियलाइज क्या किया, -1। ओके, IND इक्वल्स टू -1। -1 क्यों किया, क्योंकि हमें क्या पता है कि ऐसा मॉन्स्टर है कि नहीं। अगर कुछ टेस्ट केसेस में ऐसा मॉन्स्टर है ही नहीं, सारे मॉन्स्टर ऐसे ही मतलब गिवन टाइम में किल हो गए, तो प्रेटी गुड। लेकिन अगर इसलिए अगर ऐसे केसेस में मॉन्स्टर नहीं रहता है तो हम इसे -1 लेंगे। ओके, बट अगर है तो हमें इसे काउंट करना पड़ेगा ना। ओके, सो बेसिकली हम अभी क्या करेंगे, अभी हम ये कंडीशन यूज़ करेंगे, इफ़ प्रीफिक्स प्लस h ऑफ i, अगर प्रीफिक्स और हेल्थ इंडेक्स से बड़ी है तो हम जो IND है उसको i ले लेंगे। ओके, सो अगर एट लास्ट, और फिर ब्रेक भी कर देंगे, और फिर उसको ब्रेक कर देंगे। ओके, एट लास्ट अगर हमारा IND, अगर हमारा IND इक्वल्स टू -1 है तो हम आंसर प्रिंट कर देंगे, क्योंकि ऐसा कोई मॉन्स्टर तो है ही नहीं हमारे पास, तो हम तो सारे मॉन्स्टर्स को किल कर लेंगे ना, तो इसलिए हम यस प्रिंट करेंगे। ओके, ओके, तो बेसिकली अब हम क्या करेंगे, अब हम इस टाइप के मॉन्स्टर्स को मीन्स किल करने के लिए हम बेसिकली हम यूज़ करेंगे बॉम्ब। ओके, बेसिकली हम बॉम्ब यूज़ करेंगे। इज दैट क्लियर? सो बेसिकली हम इसमें बॉम्ब यूज़ करेंगे। ओके, तो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम कौन सा मॉन्स्टर है, ये जो कि 11 पोजीशन पर, इसकी हेल्थ 14 है। ओके, हमारे पास टाइम 11 ही है और इसकी हेल्थ 14 है, तो हमारे पास कम टाइम है, तो ये मॉन्स्टर किल नहीं हो सकता है, तो इसे किल करने के लिए हम बॉम्ब यूज़ करेंगे। ओके, तो बॉम्ब की बेसिकली रेंज क्या होंगे, रेंज क्या होती है बॉम्ब की, 1 मिनट। ये जो हमारा एक्स है, एक्स से x-k और x+k तक है ना, तो बेसिकली ये क्या हुआ 2k। इज दैट क्लियर? सो बेसिकली हमारे बॉम्ब की रेंज होंगी 2k, तो इसके बाद के जो भी राइट साइड के मॉन्स्टर्स है वो किल हो जाएंगे, है ना। यहाँ पे हमारा k क्या दिया हुआ है, k है हमारा 3, 3 टू द 6, मतलब हम 1 2 3 4 5 6 मीन्स हम 17 इंडेक्स तक के सभी मॉन्स्टर को हम किल कर सकते हैं। ओके, सो ओके, सो हम इसमें लेंगे इंडेक्स 2। ओके, IND 2, जिसको हम इनिशियलाइज कर देंगे -1। सो बेसिकली हमारे सारे मॉन्स्टर्स किल हो गए, तो ये जो लास्ट मॉन्स्टर पे जो आएगा तो वो है हमारा इंडेक्स 2, जिसको हम इनिशियलाइज करेंगे I-1। ओके, सो बेसिकली हमारा IND 2 क्या डिनोट करता है, IND 2 डिनोट करता है कि यहाँ तक के हमने बॉम्ब से मॉन्स्टर्स को किल किया है। ओके, यहाँ तक के हमने बॉम्ब से मॉन्स्टर्स को किल किया है। ओके, तो ये हमारा बेसिकली IND 2 डिनोट करता है। इज दैट क्लियर? सो एक बार हम एक स्मॉल एग्जांपल से करके देखते हैं। ओके, जिससे थोड़ा सा एक क्लियर आइडिया आ जाएगा हमें। सो बेसिकली हम सेकंड टेस्ट केस लेते हैं। ओके, सो हमारा ये यहाँ पे हमारा शेफ प्रेजेंट है, हमारा फर्स्ट मॉन्स्टर कहाँ है, सेकंड इंडेक्स पे, इसकी हेल्थ क्या है 3। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट का है थर्ड पे है, इसकी हेल्थ क्या है अगेन 3। नेक्स्ट का है फोर्थ पे, इसकी हेल्थ है, वेट अ मिनट, इसकी हेल्थ 3 और इसकी हेल्थ 4। नेक्स्ट का है सिक्स पे, इसकी हेल्थ क्या है 2। ओके, इसकी हेल्थ क्या है 2 है। क्लियर? नेक्स्ट है 8 पे, उसकी हेल्थ है 5।
ओके, नेक्स्ट है 9th पे, उसकी हेल्थ है 9। और नेक्स्ट है 10th पे, इसकी हेल्थ है 7। प्रेटी क्लोज है। तो अब हम गिनते हैं, पहले उनकी हेल्थ गिनते हैं। हेल्थ, पहले की हेल्थ है 3, तो सम होगा बेसिकली 3 देन 6। ओके, 6 + 4 10, 10 + 2 12, 12 + 5 17, 17 + 9 26, 26 + 7 equals to 33। ओके, so basically 33। ओके, सो अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास ऐसा कोई भी मॉन्स्टर नहीं है जिसकी हेल्थ हमारे टाइम से कम हो या फिर इक्वल हो। फर्स्ट मॉन्स्टर फर्स्ट मॉन्स्टर देख लेते हैं। फर्स्ट मॉन्स्टर का क्या है, हेल्थ क्या है? एक मिनट, 26 33। ओके, 3 6 10 12 17। ओके, प्रेटी क्लियर। हाँ, सो अभी थोड़ा ज़्यादा क्लियर लग रहा है। हाँ, तो अभी देखो, अभी हमारा फर्स्ट मॉन्स्टर का हेल्थ है 3 और इसका इंडेक्स क्या है 2। हमारे पास 3 मॉन्स्टर्स को मारने के लिए बस 2 मिनट्स है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। मीन्स वो मॉन्स्टर की हेल्थ 3 है और हमारे पास टाइम कितना है 2 है। एक हेल्थ को बस कंप्लीट करने के लिए बस हमारे पास 1 मिनट टाइम है, तो 2 मिनट में 3 तो कंप्लीट होगा नहीं। सो बेसिकली ये तो गया, है ना, हमारा फर्स्ट वाला तो गया। सेकंड भी नहीं होगा क्योंकि 6 बड़ा है 3 से। थर्ड भी नहीं होगा, फोर्थ भी नहीं होगा, फिफ्थ भी नहीं होगा, सिक्स्थ भी नहीं होगा, सेवेंथ भी नहीं होगा। ओके, मतलब हमारा कोई भी नहीं होगा यहाँ पे। तो बेसिकली अगर हम बॉम्ब यूज़ भी कर ले, हमारे पास के क्या दिया हुआ है 1 है, तो बेसिकली 2 के क्या होगा 2, है ना। तो बॉम्ब मतलब कोई भी लगा लो, यहाँ पे लगा लो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे बॉम्ब लगा लो, तो 2 के कहाँ से ज़्यादा तक कहाँ जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा 2 के जाएगा कहाँ, है ना। यहाँ पे लगा दिया तो 2 के यहाँ से यहाँ तक जाएगा, या फिर यहाँ लगा दिया तो यहाँ से यहाँ तक। मतलब ज़्यादा दूर तो जाएगा नहीं, लेकिन बाकी मॉन्स्टर्स तो बच जाएंगे। बॉम्ब सिर्फ हमारे पास एक है। सो अब तो शेफ का डिफीट पक्का है। सो इस ऐसे केसेस में हम नो प्रिंट कर देंगे। ओके, एक और केस ले लेते हैं। तो बेसिकली हम हमारा लास्ट एग्जांपल ट्राई करते हैं, जिससे कि हमें अभी थोड़ा और क्लियर आइडिया आ जाए कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट को और अच्छे से कैसे इलेबोरेट किए। सो हम फर्स्ट मॉन्स्टर लेंगे सेकेंड इंडेक्स पर, उसकी हेल्थ है 1। नेक्स्ट लेंगे फोर्थ पर, उसकी हेल्थ है 2। ओके, नेक्स्ट लेंगे हम सिक्स्थ पर, जिसकी हेल्थ है 9। नेक्स्ट लेंगे हम 9th पे, जिसकी हेल्थ है 4। ओके, सो नेक्स्ट और लास्ट वाला है 11th पे, जिसकी हेल्थ है 1। ओके, सो अभी हम पहले सम्स देखते हैं। 1, फिर इसका 3, 1 + 2 3, 3 + 9 12,
ओके 3 + 9 12, 12 + 4 16 और नेक्स्ट 17। ओके क्लियर। ओके सो अभी हम देखते हैं हमारा फर्स्ट वाला जो है, फर्स्ट वाले की हेल्थ 1 है और उसका टाइम है 2, तो ये तो क्लियर हो गया। सेकंड वाले की हेल्थ 3 है, उसका टाइम है 4 है, तो हेल्थ लेस है टाइम से, तो ये भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला 12, 12 हमारे हेल्थ है 12, ओके, लेकिन हमारे पास टाइम कितना है, बस 6 है, तो ये तो क्लियर नहीं हो पाएगा उतने टाइम में, है ना। तो इसमें हम यूज़ करेंगे बॉम्ब। फॉर सपोज, हमारा के क्या है यहाँ पे, के है हमारा लेट सपोज 3, के है हमारा 3, ओके। सो बेसिकली हमारा 2 के क्या हो जाएगा 6। सो यहाँ से हम 1 2, तो यहाँ से बेसिकली हम 6 एलिमेंट सामने जाएंगे, ओके। 1 2 3 4 5 6, मतलब कहाँ जाएगा, 10th वाले पे जाएगा। हाँ ओके। सो बेसिकली हमारा बॉम्ब की रेंज क्या है, 6 है, 6 है, ओके। वो स्टार्ट होगा 12 से और एंड होगा, मतलब इंडेक्स 6 से और एंड होगा 10th पे, ओके, एंड होगा 10th पे। इज दैट क्लियर। सो इसमें हमारे जो मीन्स मॉन्स्टर्स है जो कि 6th पे है और 9th पे है, बेसिकली मॉन्स्टर एट 6th पोजीशन और 9th पोजीशन एलिमिनेट हो जाएंगे। इज दैट क्लियर, ये एलिमिनेट हो जाएंगे। सो बचेगा क्या, ये वाला लास्ट वाला मॉन्स्टर। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये बॉम्ब तो यूज़ कर लिया, अब हम इसमें इंडेक्स 2 यूज़ करेंगे, ओके। IND2, IND2 यूज़ करेंगे, ओके, है ना। सो हमने इसमें IND2 यूज़ किया, IND2 को हमने 10 पे सेट कर दिया कि हाँ यहाँ तक हमने बॉम्ब यूज़ किया हुआ है, और इसकी हेल्थ जो है, हेल्थ हम इसको ज़ीरो कर देंगे। तो बेसिकली हम यहाँ पे कोड में देख सकते हैं, यस, बेसिकली ये जो पोर्शन है, तो हमने IND2 को हमने पहले सेट कर दिया, किस पे, 16 मीन्स 10th वाले पोजीशन पे सेट कर दिया, और उसमें से AI को माइनस कर दिया, ठीक है, और उसको कंपेयर किया, अगर वो 2 से के से बड़ा है तो ब्रेक हो जाएगा, नहीं तो हम हेल्थ को ज़ीरो कर देंगे। तो हम ये दो एलिमेंट जो है, ओके, बेसिकली ये दो जो एलिमेंट है इनकी हेल्थ क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। सो हम तो हमारी जो हेल्थ है बेसिकली, तो ये तो हो गई ज़ीरो। तो अब हम नेक्स्ट लूप चलाएंगे, ओके, मीन्स हमारा 12th और 6th तो डिलीट हो गया, अब हम नेक्स्ट लूप चलाएंगे, मीन्स 1 2 3 देन डायरेक्ट 3 to 17, ओके, ये क्या है, ये चले गए। तो अभी फिर चेक करेंगे, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, लेकिन ये वाला एलिमेंट क्लियर नहीं हुआ, ओके, यहाँ पे रुक गया है, तो हम इस पर चेक करेंगे, ओके। तो बेसिकली हम इसमें हमारा इंडेक्स भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा, है ना, बेसिकली हमारा इंडेक्स भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ओके। सो हमारा यहाँ पे इंडेक्स क्या हो जाएगा, पहले तो इन दोनों को कैंसिल कर लेते हैं, इनकी हेल्थ क्या है, ज़ीरो है, ओके, ज़ीरो ज़ीरो है, इसकी हेल्थ ज़ीरो है, इसकी भी हेल्थ ज़ीरो है, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या ऐड हो जाएगा, डायरेक्ट 3 ऐड हो जाएगा, है ना, हेल्थ ज़ीरो है तो डायरेक्ट यहाँ पे फिर से
3 + 0 3, 3 + 0 3 एंड देन 3 + 1 4। अब हम चेक करेंगे हमारा यहाँ पे 1 जो है 1 हेल्थ है और 2 टाइम है, तो ये तो क्लियर हो जाएगा, ये वाला भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे ये जो 4 हमारी हेल्थ है और हमारे पास टाइम कितना है 11, 4 हेल्थ है, टाइम 11 है, तो 11 टाइम मिनट्स में तो 4 वाली हेल्थ को हम किल कर सकते हैं, तो ये वाला भी क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली इन दिस वे सभी मॉन्स्टर्स किल हो गए। और ये हम लोग जो सेकेंड टाइम ये रन किया हमने, तो ये किस में होगा, ये वाला होगा इसमें, ये जो हम दिख रहे हैं ना इसमें हो जाएगा, ये मीन्स चलते रहेगा और हम प्रीफिक्स में ऐड इंक्रीमेंट करते जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो एक बार कोड को समझ लेते हैं एक बार। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इनपुट ले लिया हमने। उसके बाद इनपुट लेने के बाद पहले हम IND को -1 करेंगे। -1 इसलिए कि अगर कोई मॉन्स्टर मीन्स जिसका हेल्थ हमारे प्रीफिक्स से बड़ा नहीं है, अगर ऐसा कोई मॉन्स्टर रहा तो हम उसको ऐड नहीं करेंगे, इसलिए -1। पहले हम चेक करेंगे कि किसकी हेल्थ मीन्स इंडेक्स से बड़ी है क्या, अगर है तो हम IND को आई पे ये कर देंगे, डिनोट कर देंगे, मीन्स इनिशियलाइज कर देंगे और प्रीफिक्स को हम इंक्रीमेंट करेंगे। अगर हमारा IND -1 हुआ मीन्स अगर कोई भी मॉन्स्टर ऐसा नहीं रहा जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है ना, मीन्स कोई भी मॉन्स्टर ऐसा रहा जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, जैसे कि ये वाला मॉन्स्टर, ये आप देख सकते हैं, ये वाले मॉन्स्टर की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, तो IND -1 मतलब ऐसा मॉन्स्टर तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो डायरेक्ट हम प्रिंट यस कर देंगे कि सारे मॉन्स्टर किल हो जाएंगे, है ना। फिर हम लेंगे IND2 को हम n इनिशियलाइज करेंगे, क्योंकि अगर मीन्स अगर हमने बॉम्ब यूज़ किया तो IND2 किस एलिमेंट को डिनोट करेंगे, लास्ट वाले को, लास्ट वाला जो मॉन्स्टर किल हुआ है उसको IND2 डिनोट करता है। इज दैट क्लियर? सो हम फॉर लूप रन करेंगे और IND2 को i-1 इनिशियलाइज करेंगे। ओके, सो फिर हम एक रिवर्स फॉर लूप यूज़ करेंगे। रिवर्स फॉर लूप क्यों? वो सभी मीन्स जो IND2 है मीन्स लास्ट वाला एलिमेंट जो कि किल हुआ है, ओके, लास्ट वाला मॉन्स्टर जो कि किल हुआ है उसको उसको मीन्स उसकी जो हेल्थ है उसको माइनस करेगा A में से, और मीन्स उसकी जो हेल्थ है जो मॉन्स्टर्स किल होते हैं बॉम्ब में उनकी हेल्थ क्या कर देगा, सब्सिक्वेंटली 0 और 0 ऐसे 0 कर देगा ना, H = 0। ओके, सो बेसिकली हम फिर बाद में फॉर लूप चलाएंगे, फिर से चेक करेंगे मीन्स ये वाला कंडीशन। अभी देखो हेल्थ तो 0 हो गई इसमें, बेसिकली ये इसमें हेल्थ 0 हो गई, इसमें भी, तो हम फिर से एक फॉर लूप रन करेंगे ना यहाँ क्लियर। ओके, तो ये वाला फॉर लूप है बेसिकली, ये हम ये वाला यूज़ करेंगे। ओके, और अगर हमें ऐसा कोई मिलता है जिसका प्रीफिक्स फॉर एग्ज़ाम्पल समझ लो इसका 14 है और इसका 11, इसका 14 मतलब हेल्थ हमारे A से बड़ी है, तो हम प्रिंट कर देंगे नो। अगर ऐसा नहीं है तो हम डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे यस, हम डायरेक्ट कर देंगे प्रिंट यस। ओके, सो बेसिकली आप एक बार कोड देख लीजिए, और अगर कोई भी डाउट आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अप्रोच नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल नहीं समझ में आया, कुछ भी नहीं समझ में आया, तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दूंगा। ओके, सो वेल, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।